हम लोग ये सोचते थे कि मतलब सिर्फ अभी लेक्चर होगा, देन बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर दैट नॉर्मली टेक द सरप्राइज क्विज and according to it they will give the grades. Okay, so today we will talk about some important things about the architecture of 8085 microprocessor. So this screen is visible to all of you? The screen is visible? Yes? Yes, sir. Okay. I want to test your knowledge about the electronics. Okay, so for example, if I am having one D flip flop, please tell me that what will happen. If this D flip flop is having these two input pin, one is a data pin, one is the enable pin, the Q and Q bar. Okay, so in a first condition, suppose this is suppose like having this level. Okay, so it is having high to low in a first condition, and I am having one data 1. What will happen? What is the value of Q and Q0 in a first case? So I am writing a table that enable is having the first value just like this, enable, and D is having value. You just tell me about Q and Q bar. Tell me, D is having the value of 1. It should be, Q should be, 1 और 0 सर. huh? सर Q1 और वो Q bar 0. Yes, sir. Q1, Q bar 0. Q1 and Q bar 0. Are you sure about that? Or you want to change your answer? I am giving you some time for that. According to it, my answer will be, because this is considered as a one type of the latch, the enable is giving to control the latching facility of that latch. So I can say the last value that is stored into this one. So last value stored will be the correct answer. Okay. So if I'm changing the this enable from here to from, please unmute your mic, low to high. I'm giving the input as a 1. Now please tell me what will happen. Sir, now it will Yes, be 1 now and it 0. will be 1 and 0. Okay. Now if suppose again I will change it like this. Here it is high and it is going low. Why I'm showing? सर Because वो होल्ड पे रहेगा. it should show you the value that suppose I change the value or here as a 0. Okay, I change the value of D as a 0. Now what will be happen? The value of this one will be still 1 and 0. Why I am showing? Because I want to show you the transitions, what transitions are actually going on. So for the transition purpose, I am showing this high to low, and because I am trying to maintain it for a longer duration, so it should be clear to you that if I am saying that this duration is longer, so obviously this will activate that enable pin of that D flip flop, and finally it will. Okay. Now one more thing is that instead of taking this D, if I change it in the next slide, give me the answer. If I change it like this, if this is my D and this is my enable and this is my Q bar, I am not taking Q into the consideration. So can you please tell me that what will happen if I am applying 1, if I am applying here this active high, so it is low and active high, and you can please tell me what is the value here from Q bar? 0, sir. 0. Very good. So I hope that you all of you are all of you are doing in your notebook also. So this is 0. Okay. So actually the thing is that here I have supplied my input in the format of 1, but here I am getting my output as 0. But it is not the desired output. So what I can do? What I can do? Obviously, I will invert it. So with the help of some inverter, I will represent my inverter with the help of some bubble. So I will invert it, and finally I will give it to the some another type of device. This device is normally called as a
buffer. Okay, so I'm writing this is called the buffer. So this buffer is having inverted input like this. So can you please tell me what is the output of this one? What is the output of this? So actually, if you trying to understand about the working of this buffer, why buffer is why we are connected the buffer in that IC. So the question is that the buffer is actually increase the driving capability of any bus. Okay. Driving Okay, current. so the thing is that my 0 will be inverted on here. So this will be converted as a 1. So this 1 will be still in the position of this buffer because we have not given any type of the logic to this one. So according to this one, we can say it is active low. We can say this bubble will say active low enable buffer. So this says that to supply the input from to supply the signals from input to output, this will require that we should actuate it with the help of some ground signal or some active low signal. So this is I am considering as an active low signal I have given on here. So immediately this buffer will be activated and this output will not be 0 because it is inverted by this bubble. So I have clearly showing this is bubble. So this it will be inverted by this bubble. So this is the inverter. And finally my output is 1. Okay. Why? अब आपसे कहेगा कोई आपसे कहेगा सर इसको क्यू से भी अपन ले सकते थे, आपने अननेसेसरी यहाँ पे इतना सर्किट कनेक्ट कर दिया, ऐसा कर दिया. Because why we are connected this buffer? Because we should be having the some control. So for control purpose, कहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं? So we are controlling your input to going on the output. So you should having some controls types of circuit. So this buffer is trying to control your input to flow on the output line. Okay, so this is the meaning. And another purpose of this buffer is that it will always increase the driving capability. Okay, means it will try to strengthen your signal. I will give you the one more example on here is that, for example, we know that whenever we are having any type of the path, suppose this path is I'm having, so I'm having this path and I'm just sending a signal just like this. Okay, so I started from time t1 and this is t2, and here it suppose if at the distance it is started from x0 and it is here I am taking at x19. So may possible that its strength will be go down. Its strength will be go down, and may possible that it will be limited in the some like this one. So the possibility says that the signals which will be detected by your logic circuitry will not be detected properly because your signal strength is now decreasing. So strength is decreasing. So I am writing strength is decreasing. So now what will happen? If you are traveling a very long distance, for example, if I'm saying this is T9 to T20, if it is like this, at more distance for X50, so possibility says this will be decreases like this. So your strength will be continuously decreases, signal strength. So the devices which are actually trying to detect this signal will not detect the original signal, and finally they will detect if I transmitting 1, may possible that they will receive 0 if the distance is large. Okay, so in this case it is normally we can say we can use any type of the buffer for this case. So I have taken the one example of the buffer. So if in this duration if I connected one buffer like this, and this is the control terminal of this buffer. So for example, here I have connected this buffer. So here I send the 1, here I will get the 1, but when I will get the 1, you can see I not connected any type of bubble on here. So obviously it will require an active high signal. So I have connected one active high signal on here. So for example, I have connected with the VCC. So this VCC will activate this buffer and signal 1 will be transmitted from input to the output. Okay, so similarly here after the some distance you can connect another type of buffer.
so signal strength will be maintained. So this is the purpose of this buffer. So same buffer I have connected on here. Okay, this is the one sample. This is the one sample connection which is present inside the IC. There is a one type of IC is called 74LS373, which is called as a one type of octal latch. Why it is called latch? It is clear to you, because whenever enable input will change the status from high to low, immediately that logic level will be stored inside that logic device, inside this D flip-flop. And why is called octal? Because there is a not only the single latch is present, there are total 8 latches are actually available. That's why it is called as a one type of the octal latch. I will tell you the purpose of this one, that why it is required. Because we know that in the case of 8085 microprocessor, we are having the demultiplex address oblique multiplex address oblique data bus that is available in the format of AD0 to AD7. I want to separate it. So how I will separate it? So I will take one IC of IC74LS373. So this is my 74LS373, and I will connect all the buses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, and inside this I am having the one circuit in the format of D flip-flop that I had drawn on here. So I am having one D flip-flop. So I am taking only the one D flip-flop here, D and Q bar, and this is my enable. So this is my enable. So this enable I have connected here with the help of some line. Okay, so for example, this is my line AD0 to AD7 I have connected. Okay, so I have connected my AD0 to inside to this, like this in manner. Here I will take one buffer, like in a previous case we have connected. So this is my buffer. Okay, so this will be having an active low control. So it shows the bubble. So this will require that my output should be, if I want to activate it, I will connect it with the ground. Okay, so please see the logic. Okay, यहाँ से मुझे separate out करना है. यहाँ पे ये combination है. तो ये combination किसका है? This is the combination of AD0 to AD7. So AD0 to AD7 is completely coming as a one line. So the thing is that I want to store the logic of A0, because the possibility says I have given the example of rail. So that in the case of this, I have shown you that whenever the content will be flow on the line, the content will be just like this one. I will take the one example for the address 3009. I am having the one data, and this is 4C. Can anybody tell me that what the, so here we can say that on the line A15 to A8 I am having the 30, and from A7 to A0 my content 09 will be flow, and on D7 to D0 I am having 4C. Okay, so here I am just considering the case of this line A7 to A0. Okay, and here it will be start from D0 to D7. Can anybody unmute yourself, and then can you please tell me what are the contents on this A7 to A0 and D0 to D7? Because this is the your complete line. So this complete line is corresponding to AD7 to AD0. Tell me. ये आपकी वो complete बस है जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स है. तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स से मतलब आपका T1 से लेके T2 तक जो है आपका एड्रेस बस का कंटेंट फ्लो होगा, और फिर बाद में T3 से लेके आपका T7 तक एक अप्रोक्सीमेट टाइम मान लिया. तो ये मेरा ये है. तो मेरा ये T3 से T7 काफी लॉन्गर ड्यूरेशन है, बट ये जो मेरा T1 से T2 है, यहाँ पर जो भी कंटेंट आ रहा है ये मेरे को लेच में स्टोर करना पड़ेगा. सो आई वांट टू स्टोर दिस कंटेंट इनटू द लेच. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस सर्किटरी 74LS373. तो हर एक लाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल लेच यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने सिर्फ एक का ही शो किया हुआ है, हो सकता है अपन और भी इसमें आगे और कनेक्ट करेंगे. ठीक है,
बट अगर हम मार्केट में आप आईसी लेने जाएंगे, सपोज ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ one D0 to D flop. Okay, so you can connect like this. This is a D Q bar. This is enable. So this line will be again connected to this logic. तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सिर्फ मैंने अभी एक को ही कनेक्ट किया था, पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, तो अपन इसको और कनेक्ट कर लेते हैं. तो माई ओके, और ये जो लाइन है ये बफर है, इसको मैंने इसी लाइन से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन. व्हाट विल हैपन, there is a enable. That enable is coming from the microprocessor. Actually this line is coming from MUP. This is coming from the MUP, and obviously this enable will be controlled. This line will be controlled by MUP. Okay, so obviously the MUP will send the some signal, and that signal is available in the format of ALE. This is called address latch enable. So why it is called address latch enable? Because this is trying to activate a latch which is in the octal in the format, and this latch is actually pertaining for to store the lower order byte of that address. Okay, that's why the name is given to that signal as a ALE, address latch enable. So when this ALE will be having the status from low to high, what will happen? By having the status from low to high, I'm trying here, so it is low to high. So this is my ALE. Okay, and for example, the content, if I fill this fill in the blanks, so this will be 09, and here the data will be 4C. So my important point on here is that I want to store this A0 to A7. I don't care about D0 to D7 because it is available for longer duration. So whenever the microprocessor will execute this data D0 to D7, this is available for longer duration, so there is no problem. But the problem is this LSB of that address. So I want to store the LSB of this address into this latch. Okay, so can you please tell me what are the content? For example, if this is according to this, it should be D0 to D9. So if I write down this one, so this will be just like this one, 0 0 0 0 1 0 0 1. So this will be flow on line AD 87 here, AD7 to AD0 like this. Okay, so obviously AD0 will be having a combination, just a minute, AD7, don't confuse it with AD6. So here I am getting a value 1, here I am getting value 0 0 0, sorry, not 0, it is should be 1. So this is 9, this is 0 0 0 0. I want that. अभी अपन दो का एग्जांपल लेते हैं. जैसे ही मैंने ये इनेबल को लो से हाई किया, ये 1 यहाँ पे गया है ना, ये 0 यहाँ पे आया. अभी दो का अपन एग्जांपल ले, जैसे ही ये दोनों गए तो ये इनेबल इसने एक्टिवेट कर दिया, तो इनेबल इसका एक्टिवेट हो गया. फॉर एग्जांपल इसको भी लाइन को यहाँ कनेक्ट कर लो, तो जैसे यहाँ पर ये आपका एक्टिव हाई सिग्नल आ रहा है, ये दोनों लेज जो है आपके इनेबल हो जाएंगे, एंड फाइनली योर 1 and 0 will be available here. So but due to this one, oh sorry, it's not 1 and 0 because we are taking the output from Q bar. So again we have to change our output, so it is 0 and it is 1. ये समझ में आ गया? मैंने पिछली बार बताया था आपको, क्योंकि Q बार से आउटपुट ले रहे हैं इसलिए जस्ट इसका इन्वर्टेड आएगा, और फाइनली ये जो इन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये इन्वर्टर इसको 1 कर देगा. This will convert into the 1 and finally it will convert into the 0. So now if ALE is immediately changing, now we will take the next case, that what will happen in this case. Suppose ALE is changing its status, this is ALE, what will happen? Anybody can please unmute your mic. नेक्स्ट बार यहाँ पे जो भी आ रहा है, क्या इमीडिएटली, जैसे मान लो यहाँ पे 4C आ रहा है, तो क्या 4C इसको डिस्टर्ब करेगा? स्टोर रहेगा आउटपुट. हाँ, मुझे वैल्यू स्टोर हो जाएगी. हाँ, वैल्यू स्टोर हो जाएगी ना इसके अंदर. और ये वैल्यू कब तक स्टोर रहेगी? अब उसका आंसर भी बताओ, ये वैल्यू कब तक स्टोर? जब तक इनेबल हाई चेंज नहीं करेंगे. हाँ, इनेबल हाई नहीं करेंगे, मतलब ALE जब तक अपना वापस से इस तरह का स्टेटस नहीं करेगा,
है ना, यहाँ तक अपन मान के चलें कि ये लो है और यहाँ हाई है, तो एली अगर मेरा यहाँ पर चेंज नहीं होगा, जब इस स्टेटस में नहीं आएगा, तब तक जो है वैल्यू यहाँ पे लैच हो जाएगी। ये दिस विल कॉज द वैल्यू टू बी लैच। okay, till this duration. So I will show you the one diagram for that one, that please see this diagram and then tell me what is going on here. Before this, please go to this. Sorry. So please see this circuitry, what this circuitry is showing. क्या हो रहा है इसके केस में? Anybody? Same. So this is called a logic, a block schematic of demultiplex. किसको demultiplex कर रहे हो आप? Your line AD0 to AD7. Now, can you please tell me why we are taking a separate? This is the physical connection that we are taking. So यहाँ से कोई बता सकता है कि यहाँ पर जो अगले स्टेट में जो मेरा जो डाटा आ रहा है, जैसे मान लो ये तो आपका आ रहा है, आपका किसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है, ये पहले आया, मतलब ये पहले आएगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि मैं एक टेबल अगर यहाँ पे बनाऊं कि यहाँ पर मेरा A0 से लेके A7 का डाटा क्या आ रहा था, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा A0 to A7 का जो डाटा आ रहा था वो कुछ इस तरह से आ रहा था कि वो था मेरा 9, तो दिस विल बी 1 0 0 1 0 0 0 0. It was the 09, so that's why it is coming as a 09 like this manner. Okay, so from time t1 to t2 I am having this value. तो ये मेरा टाइम t1 से लेके t2 तक का वैल्यू है। t3 से t9 लिया था, अपन ने क्या लिया था, t7 लिया था। t3 से t7 की वैल्यू क्या आएगी उस लाइन के ऊपर, कोई बताएगा यहाँ पे? वो होगा आपका d0 से लेके d7। तो d0 to d7 पे क्या डाटा हमने लिया है, 4c। तो 4c, so according to this the 4c will be can represent just like 0 1 0 0, and the c we can say a will become 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 and 1 1 0 0. So 1 1 0 0 will be here, so it will be 1 1 0 0. Okay, so this will be travel on line D7 to D0. Okay, so now I am representing it here. So here 0 0 1 1, and this is 0 1 0 0. So you can think about that कि ये जो लाइन है वो इतनी फास्ट चेंज हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, हियर आई एम गेटिंग 0 9, but here on this line here I am getting the value of 4c. So here I can say that this is my LSB of address, and this is my data. So you can separate out. Now you can think about that कि यहाँ पे जो input है, that input is my AD0 to AD7. Due to this latch and this ALE combination, they are actually separated out. So here I am getting a separate 8-bit value, and here I am getting a separate 8-bit value. But this separate 8-bit value is corresponding to the LSB of the address, and this is corresponding to the data. So you can take and you can further process this data unless and until this ALE is going from again high to low. Okay, so one more figure I want to add here, that please check this figure. This is the real multiplexing. Okay, so वो जो डायग्राम मैंने आपको बताया था वो मैंने यहाँ पर आपको एक ही इसमें शो किया था, ये ऐसा, ये इसका कंप्लीट डायग्राम है. सो दिस इज द
circuit diagram of demultiplexing scheme. Okay, so here you can take your data, here you can take this one. So here for this example, this is my 09H here I am getting, which is the LSB of address, and here I am getting my data. This is 4C, so 4C is my data. So here I am getting in the format of this. Clear? So this is the demultiplexing logic. So very important role that ALE plays here, that microprocessor automatically on and off this ALE, means it will automatically enable this ALE whenever a new operation is going on. So according to the new operation, I will tell you whenever we will discuss the timing diagram. So this new operation will be, whenever the new operation is going on, this ALE will always become like this. Okay, so it will permit the data to enter, and if when it will go low, it will show that data should be latch. So data enter, I will say my data will be enter, and my data will be latch. Who is controlling it? My ALE is controlling it. Got it? Any question for this diagram? I'm moving ahead. Okay, if there is no question, then I will tell you the one more important thing in the architecture with the help of the external, because this IC I have connected external to the microprocessor, and the name of that IC is 74LS373. So it is called as a one type of octal latch, which is normally used to demultiplex address oblique data bus. Okay, now in the microprocessor, I have shown you that if you want to reset this microprocessor, there is a one pin, and the direction of that pin is reset in, and this is the input pin. So I will say this is one type of the input pin, and this requires that you should be having the one circuitry outside. So there should be one circuit outside, or we can say externally connected circuitry, which will generate the active low signal to perform any type of reset operation. So this is, I want this should generate an active low signal for a very long duration. Okay, so what is the minimum length? So first we will see the impact, that what is the impact of this reset in circuitry on the microprocessor. So first of all, whenever we are giving an active low signal in the format of reset, so for example, this is my high and low. So if I'm giving a reset to the microprocessor, first thing is that my program counter will be clear. So if the program counter will be having any value, it will be automatically clear, and it will try to clear some more flags, etc. So it will try to reset. Sometime it will try to reset all the registers, all the values of address and data bus. But normally, in the most of the cases, it will try to affect the program counter. So program counter will be initialized to the 000. So ultimately, this reset in will try to reset your microprocessor. So may possible that it will affect the flags, it will affect your registers in the some of the cases, it will affect your buses in the some of the cases, like this one. But the question rises on here is that how I can generate this reset in bar pulse here. Okay, so one more thing is that I will tell you that I have shown you that this duration should be very long. So how we can say, we know that the operating frequency of the microprocessor is suppose 3.02 megahertz. If you take the invert of that one, say for example, if I'm calculating T naught, so T naught is equal to 1 upon F naught. So this will be here 1 by 3.02 megahertz. So here it is coming just like 0.33 microsecond. You can calculate it if I'm not wrong. 0.33 microsecond. Oh, sorry, it is not microsecond. Yeah, it will be here microsecond. So it will be. So we want, what is the criteria that अगर आप यहाँ पे reset दे रहे हो तो reset की ये जो low width है वो कितना होना चाहिए? तो उन्होंने ये माना है कि जो reset की जो width है
है ना, for low duration it should be 3 times of 0.33 माइक्रोसेकेंड। तो आपका इतना फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 0.99 माइक्रोसेकेंड होना चाहिए। तो आप जो भी सर्किटरी यहाँ पर बना रहे हैं वो कुछ ना कुछ आपका जो टाइम कांस्टेंट है उस टाइम कांस्टेंट को आपको इस तरह से रखना पड़ेगा कि ये मिनिमम इतनी टाइम तक जाए ही जाए, इससे ज्यादा चलेगा पर आप इतना ड्यूरेशन इसमें होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, रिसेट क्या के लिए क्या करें, तो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so again I will draw my microprocessor here. So this is my 8085 maybe, and this is my reset in, and I hope that why I'm putting bar stands that this should require a pulse for active, low pulse for proper operation. So this is if my active high and low, so this low is very duration. Why I'm showing a high on here, so please don't confuse, because I require a transition. Whenever this transition is not going on, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्टिव लो सिग्नल जनरेट करेगा। अब अपन यहाँ पे आते हैं कि क्या सर्किट अपन यूज कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ द सर्किट दैट वी कैन यूज is the some RC type of the circuit. So here I taken one R, here I had taken the value of this C, and I have connected it to the ground. Okay, and I have connected this is to VCC, which is plus VCC. So you know that your microprocessor normally works on a VCC of 5 volt. So this is R and C. So here I can say if I'm using some RC circuit, if I'm using some RC circuit, according to it, if I'm saying that tau is the time constant, so time constant I can write down into format of R into C. So can you please tell me, if I'm taking the value of R is equal to 50K, what should be value of this so that I can get the time constant as 500 millisecond? What is the value of C now? Can you tell me? 10 microfarad? 10 microfarad. Yes, the value of C should be 10 microfarad. So value of C is a 10 microfarad. Sorry, 10 microfarad. Okay, so this says that this 500 millisecond is very, very long according to the desired operation. So this is, we can say, this was 0.99 माइक्रोसेकंड. सो व्हाई आई एम सेइंग, कोई कहेगा कि सर आपने तो बहुत ज्यादा रख लिया, 500 मिलीसेकंड तो बहुत ज्यादा होता है, बट द पॉसिबिलिटी इज दैट कि ये जो आर और सी की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ये सिर्फ मैं जो कंपनी बनाती है वही मैं यूज कर सकता हूँ। आप चाहें तो कोई भी यूज कर ले, बट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि मैं 500 मिलीसेकंड का अगर कोई सर्किटरी अगर बाहर यूज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसकी जो ड्यूरेशन है वो 0.99 माइक्रोसेकंड से ज्यादा है, तो वो मेरे सर्किट को अच्छे से रिसेट कर पाएगा। ठीक है, नाउ ये रिसेट नहीं होगा। अभी रिसेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कनेक्ट सम स्विच हियर. सो आई विल कनेक्ट वन स्विच हियर. So switch is just like this. I will connect this switch here. So this is my switch S, and here I connected. So can you tell me that what will happen in the first step? In the first step, this capacitor, because it is connected to plus 5 volt, it will start charge. Okay. So if I draw the charging waveform of this C, if I draw the charging waveform of this C, it will show like this. So my capacitor starts charging. So this is my capacitor charging. Okay, so this is charged. When I press my switch, so if I draw here, sorry. So this is my capacitor charging. When I press my switch, so switch is pressed in the next condition. What will happen? The charge that is stored inside this capacitor will get a path and it will be grounded. So it will be grounded. So immediately I will, if it suppose अभी वो चार्ज है, तो चार्ज है तो मुझे किस तरह की पल्स मिल रही, तो अपन यहाँ पे एक बनाते हैं पल्स. तो अगर वो चार्ज है तो वो यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है इस एक्स पे, तो एक्स का जो वोल्टेज है वो क्या मिलेगा मुझे, एक्टिव हाई. ठीक है, वो एक्टिव हाई ड्यूरेशन. मैं कोई दूसरा कलर यूज करता हूँ. So here this X value should be active high.
The voltage that I am getting on here is active high. Now my switch is pressed. When the switch is pressed, the capacitor will get a path of the discharge. So this is my discharge path. Okay, so capacitor will be discharged, so it will be discharged like in this manner. So here I am getting a active low pulse. So this is high and this is low. So if this is more than 0.99 microsecond, automatically it will send a reset signal and the microprocessor will be reset. Okay, is it clear? Is it clear how the microprocessor will be reset? Microprocessor will be reset with the help of this RC circuitry which is connected outside of this. So when the switch is pressed, so initially we can think about that it is connected with the VCC. So when the VCC is plus 5 volt, so we can think about that it will be first charge and this will be charged up to this level. When somebody will press the switch S, immediately this capacitor will get a discharge path and this will be completely discharged, and finally the output that is appear across the this capacitor will be finally 0. So here I am getting an active low output on here. Okay, now what will happen when I remove this VCC? Okay, in the second case, so another case 2. Okay, so I am coming to next slide. Case 2 means VCC was initially plus 5 volt. Initially, when you switch off your kit, switch off the circuit. स्विच ऑफ सर्किट का मतलब होता है कि आपने VCC बंद कर दिया, तो VCC बंद कर दिया मतलब वो हो गया आपका 0 वोल्ट. अब 0 वोल्ट हो गया तो फाइनली अब क्या होगा? कैन यू थिंक अबाउट कैपेसिटर चार्ज है ना, मतलब यहाँ से आपने रिसेट दबा दिया, इस स्विच को प्रेस कर दिया, इसका डिस्चार्ज पाथ मिल गया. अगर मान लो स्विच ओपन है, इफ द स्विच इज ओपन, नाउ इन द केस स्विच इज ओपन, अनदर कंडीशन स्विच इज ओपन, तो इस केस में अपन मान के चलेंगे कि यहाँ पर जब मेरा VCC ये था प्लस 5 वोल्ट, तो मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया. फुली चार्ज, ठीक है, ये मेरा फुली चार्ज था. अब मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ इस तरह का सर्किट अभी अब लगाना है कि यहाँ पर जब मैं इस किट को फिर से ऑन करूं तो ऑटोमेटिकली मैं ऑन करते टाइम ये ऑटोमेटिक रिसेट जनरेट कर दें. बात समझ में आई? मतलब जैसे मैंने वापस से VCC यहाँ पे, अभी VCC यहाँ पे 0 दिख गया तो कैपेसिटर मेरा ऑन है, तो ऑन है मतलब यहाँ पे क्या पल्स सेंड करेगा, वो हाई करेगा कि लो सेंड करेगा? यहाँ पर रिसेटिंग पे स्विच इसको आपने ऑफ कर दिया है ना. नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जब भी आप सर्किट क्लोज करें तो उसके बाद में पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपके सारा कैपेसिटर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाना चाहिए. आपने कहा कि जैसे VCC यहाँ पे लगा हुआ है, VCC लगा हुआ है तो कैपेसिटर चार्ज है, तो चार्ज है तो मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज है. आपने तो यहाँ पे उठा के किट को बंद कर दिया. अब किट को बंद कर दिया तो ये तो है, इसके अक्रॉस चार्ज है, लगती ऐसा होना नहीं चाहिए. तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा कोई सर्किट बताओ कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए इस स्विच को बगैर प्रेस किए. तो सर पैरेलल में रेजिस्टर लगा देंगे. नहीं, रेजिस्टेंस से नहीं होगा. मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हम इसमें एक छोटा सा एक डायोड लगा देंगे एंड दैट डायोड विल बी लाइक इन दिस मैनर, है ना, लाइक इन दिस मैनर. ओके, तो हमने क्या किया, अब इस स्विच तो अपना ओपन है, हमने इसको कर दिया VCC को यहाँ पर 0, इसको 5 वोल्ट से कर दिया हमने 0 वोल्ट. 0 वोल्ट कर दिया मतलब 0 वोल्ट विल बी ट्रीटेड एज अ वन टाइप ऑफ द ग्राउंड or a path where this charge can be discharged. So here I am getting a discharge path not from the switch because switch is open. So here I am getting another discharge path. In the case ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब आप यहाँ पर इस VCC को 0 कर दोगे. VCC को 0 किया मतलब आपने किट को बंद कर दिया. So I am getting a new discharge path and this discharge path is like this will be go. So this is my new discharge path. Okay, so the point was there is that आपने करा क्या यहाँ पर, अल्टीमेटली आपने पावर ऑफ कर दिया. जब पावर ऑफ कर दिया तो आपका क्या हो गया, पावर ऑफ कर दिया तो जैसे पावर ऑफ किया योर कैपेसिटर
will be discharged through diode. Okay, through diode. Okay, so now capacitor will retain a voltage of 0 volt. Okay, so that's why it is called So according to it, this circuit is sometimes called here power on reset circuit. So why it is called power on reset circuit? I am giving the name of this one is that power on reset. अब जैसे आपने VCC यहाँ पे लिखाया तो इसको पावर ऑन रिसेट क्यों बोलेंगे, कोई बताएगा अनम्यूट करके? तो पहले तो ये दोनों वर्किंग समझ लो, स्विच को प्रेस किया, दूसरा VCC को 0 कर दिया, दो कंडीशन मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगली बार फिर से VCC आपने लगाया तो इसको ऐसा नाम क्यों दिया आपने, पावर ऑन रिसेट सर्किट? एनीबॉडी? तीन कंडीशन, आई मेंशन यू द 3 डिफरेंट कंडीशन. कंडीशन 1, okay, switch VCC was 5 volt and S is pressed, है ना. कंडीशन 2, VCC equal to 0 volt, S open. कंडीशन 3, VCC, ऐसा कि जब रीसेट तभी होगा जब VCC 5 volt and switch is open. क्या होगा बताओ? रीसेट नहीं है, सॉरी, यहाँ पर इसको प्रेस्ड आएगा. बताओ, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू. अब यहाँ से इस वाली कंडीशन को समझो. अब इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आपने VCC लगा तो दिया, स्विच आपका ओपन है, तो आपने VCC दिया +5 वोल्ट का. फॉर एग्जाम्पल आपने ये कनेक्ट कर रखा है ना, सर्किट कुछ ऐसा बना रखा है अपन ने वहां पे. So when I initially connected VCC equal to 5 volt, this is my R and C. So obviously this capacitor will take some time to charge, and this charging time will be dependent upon the on what? It will be dependent upon the time constant. So my time constant is very high. We can say it is 500 milliseconds. So if it is 500 milliseconds, so whatever the pulse that is generated across this terminal, so if I am getting, so here capacitor is charging slowly, just like this. It is charging slowly. So I am getting an active low pulse, not active high. I am getting active low till when the capacitor will be fully charged. Okay. So जब मेरा capacitor fully charged हो जाएगा, I will get an active high. So that's why the name is given to this circuitry as पावर ऑन रिसेट. जैसे आपने पावर ऑन किया, ये सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर एक रिसेट सिग्नल सेंड करेगा. इन दिस इज कंसिडर्ड टू रिसेट. आई एम सेइंग दिस इज द रिसेट इन एक्टिव लो पॉइंट. इज इट क्लियर? यस, एनी डाउट? So this circuitry, I will tell you again that this circuitry is connected outside of the microprocessor to reset that microprocessor. So this is called power on reset circuitry. Okay, is it clear? सर ये थर्ड वाला केस वापस बता दीजिए सर. ये चार्जिंग तो हो रहा है, वो एक्टिव लो कैसे दे रहा है सर स्टार्टिंग से, वो बता दीजिए. इसके लिए आपको ये 1 और 2 समझ में आया कि नहीं, बताओ. हाँ सर, 1 आ गया, लास्ट वाली नहीं आई कि वो डायरेक्टली रिस्टार्ट की. अब बेटा मेरे को ये बताओ कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वहां पे कितना है. मैं एक और चीज लिखता हूँ वहाँ पे, कैपेसिटर वोल्टेज कितना है, CV. यहाँ पे बताओ, जब यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट लगा रखा है, स्विच को प्रेस किया तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. चार्ज नहीं होगा बेटा, वो प्रेस कर दिया ना स्विच को, तो ये 0 वोल्ट हो गया. आई एम गेटिंग 0 वोल्ट. जब मैंने VCC लगाया, VCC मैंने 0 वोल्ट कर दिया, स्विच मेरा ओपन है, तो डायोड को क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज पाथ मिल जाएगा. तो यहाँ पर मेरा 0 वोल्ट मिल रहा है ना. क्यों मिल रहा है? क्योंकि डायोड के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा वो, क्योंकि VCC आपने 0 कर दिया, स्विच ओपन ही है. तो इस केस में जो पहले वो चार्ज था, पहले मान लो वो 5 वोल्ट तक चार्ज हुआ है ना, तो 5 वोल्ट से वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होते हुए कहाँ चला जाएगा? 0 वोल्ट पे, क्योंकि उसको आपने VCC जैसे
पावर ऑफ किया कीट का, ऑटोमेटिकली वो 0 वोल्ट पे चला जाएगा। अब तीसरे वाली केस पे आओ, अब मुझे बताओ इसमें कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा। कैपेसिटर 0 वोल्ट से इफ आई एम राइट डाउन हियर 0 वोल्ट से वो धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट होगा, तो वो कहाँ जाएगा, 5 वोल्ट। और अगर वो 5 वोल्ट तक जा रहा है तो उस केस में मेरे को यहाँ तक, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है तो मतलब मेरे को तो एक्टिव लो पल्स ही मिल रही है ना, यहाँ पर एक्टिव लो पल्स ही मिलेगी ना, क्योंकि वो अभी धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। जब वो फुली चार्ज हो जाएगा तो मुझे फिर एक्टिव हाई मिलेगी। तो इस ड्यूरेशन में मेरा माइक्रोप्रोसेसर को जो ये जो कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड विद द रीसेट इन बार। सो रीसेट इन बार पर मेरे को जो यहाँ पर ड्यूरेशन मिलेगा, जब तक कि ये पूरा टाइम कांस्टेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा और ये 5 वोल्ट तक नहीं आएगा, है ना, मतलब इसको यहाँ तक आने के लिए मेरे को 500 मिली सेकेंड लगेंगे पूरा चार्ज होने में, 5 वोल्ट तक लाने में। तो जब तक बिलो 500 मिली सेकेंड आई एम गेटिंग दिस पल्स। सो दिस इज द केस ऑफ दिस वन ऑफ बिलो 500। फायर टाउ लगेगा ना, क्योंकि 5 वोल्ट तो स्टेडी स्टेट पे रीच करेगा। क्या लगेगा, मतलब टाइम जो चार्जिंग टाइम लगेगा वो 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट लगेगा ना, क्योंकि उससे स्टेडी स्टेट पर रीच करेगा तभी 5 वोल्ट आएगा। हाँ, अपन ने एक नॉर्मल फिगर ले लिया 500 मिली सेकेंड का, किसमें 500 मिली सेकेंड, हाँ, है ना। तो अपना सर्किटरी पूरा ऐसा बना हुआ है, मैं इसको कंप्लीट ड्रा करता हूँ तो सर्किट मेरा पूरा ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर मेरा स्विच है, हियर माय स्विच इज कनेक्टेड हियर जस्ट लाइक दिस। तो अभी वो ओपन ही है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे मैंने एक डायोड कनेक्ट करके रखा हुआ है। सो वन डायोड इज कनेक्टेड हियर लाइक दिस। So this is my diode. Okay. So I hope that this is clear why it is called as a power on reset circuit. Simply आप कोई भी किट को या सर्किट सिस्टम को ऑन कर रहे हैं, आपने उसको पावर दिया मतलब 5 वोल्ट दिया सर्किट को, तो पूरा सर्किट आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होने पे ये जो सर्किट आपने आउटसाइड कनेक्ट किया हुआ है, ये सर्किट ऑटोमेटिकली एक एक्टिव लो पल्स जनरेट करेगा, और ये एक्टिव लो पल्स जाके आपके माइक्रोप्रोसेसर को रिसेट कर देगा। और हमेशा जो भी डिजायर्ड रहता है दैट व्हेनेवर यू आर स्विचिंग ऑन योर सर्किटरी, यू ऑलवेज वांट दैट माय सर्किट शुड बी रिसेट, क्योंकि मैं उसमें नया प्रोग्राम कर सकूं या मेरा सिस्टम इनिशियलाइज हो सके। तो आप ये हमेशा चाहेंगे कि वो रिसेट हो। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सर्किटरी वी नॉर्मली यूज फॉर दैट। ओके, सो दिस इज क्लियर, दिस पावर ऑन रिसेट सर्किटरी। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, ओके। एनी क्वेश्चन इन डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑल्सो? Demultiplexing, this diagram, this circuit diagram and another circuit diagram. Yes. Okay. Now I am explaining one more concept. अभी दो एक्सटर्नल सर्किट अपन ने कनेक्ट किए हैं, तीसरा एक्सटर्नल सर्किट मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले देखें कोई क्वेश्चन इसमें, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। बाकी लोग बैठे हुए, आप लोग सिर्फ क्या लेक्चर सुनते हैं, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते हैं। जब मैं उसके नंबर ऑफ व्यूज देखता हूं तो उसमें रिकॉर्डिंग में भी आप नंबर ऑफ व्यूज आपके बहुत कम रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर लेक्चर की हम रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। जहां पर ऐसा लगेगा कि हाँ ये रिकॉर्डिंग अपलोड करना चाहिए, वहीं हम कर रहे हैं। अभी इनिशियली में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो क्लास में जो हो गया एक बार बोल दिया मतलब हो गया। So if there is no question, then I will move forward. There is another type of circuitry which is available in the microprocessor, is called clock circuitry. Okay, वो clock circuitry हमें बाहर से connect करना पड़ेगा। But before starting the clock circuitry, clock circuit, I will tell you the some more important thing is that if I taking the one case on here, if suppose if I am having two logic devices. One logic device, if I say D and Q and Q bar, here it is run on the basis of some clock base. So this is my clock, this is my clock, and this is my D, and this is my Q and Q bar. Okay, it requires active high clock or a, okay, so this is my D and this is my Q and this is my Q and Q bar. So this is my Q and Q bar like this one. Okay. When this circuit will be actuated. So for example, if I am having one and here connected enable, so enable of this both the are tied with the one. So if I connect this enable with one, this enable as a one,
Okay, so can you please tell me what will happen? This is synchronized circuitry, so means each and every input is synchronized with the clock. Okay, so for example, here also I am having 1. So this bubble will show that this will be triggered. This will be triggered with the some negative edge triggered. So negative edge triggered means whenever the clock will be having, for example, if I considering this is my clock, so when the positive edge of the clock will be coming, this will be automatically activated. And on the other hand, if I am having a same circuitry like this, okay, so this will be come to the output. So final output will be what? This will be 1, this will be 0, this will be 1, and this will be 0. So for example, if I am generating some clock like this, okay, so if I'm saying this is my positive edge triggered clock and negative edge triggered clock, so this will try to actuate this circuitry. This will try to actuate this pulse. Will try this pulse will try to actuate this circuit, while this edge will try to actuate this circuitry, like in this manner. So here I am getting that if I am generating the clock in a biphase manner, this सर्किट विल बी एक्टिवेटेड, बिकॉज यू कैन थिंक यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये सर्किट जो है वो आपका पॉजिटिव एज पे काम कर रहा है क्लॉक की, और ये आपका नेगेटिव एज पे क्लॉक कर रहा है. तो अगर मेरे पास कोई ऐसा सर्किटरी है जहाँ पे पॉजिटिव एज नेगेटिव एज दोनों का सर्किट अगर मैं जनरेट कर पाऊँ तो मेरी दोनों जो सर्किटरी है वो सेम टाइम पे वर्क कर सके. तो पॉसिबिलिटी ये कहती है कि आप कोई ऐसा सर्किटरी यूज करो जिसमें ये दोनों क्लॉक आप जनरेट कर सको. जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर मैंने कोई ऐसा कुछ जनरेट किया, मान लो एक मतलब इसको अपन क्यू का बार नहीं लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं अपन यहाँ पर क्लॉक का अपन ले लेते हैं सी एंड सी बार, है ना. तो सी अगर मैं कोई मेरा इनपुट आ रहा है तो सी का इनपुट कुछ ऐसा आएगा. मेरा सी का इनपुट यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि एट ए टाइम इंस्टेंट t1 इफ आई एम गेटिंग दिस पॉजिटिव एज, immediately this circuit will be work. So this circuit will be work on positive edge. Okay, this circuit immediately if I'm taking the inversion of this one, this circuit will be work on like in this manner. So at the same time t1 instant, my both the circuit will be activated. You can think about that. The property of both the circuits are different because it will actuate when the positive going clock is coming, and this will be actuated when the negative going clock will be coming. Okay, so my basic constraint is that I want to initiate it on the time duration t1 at the same time t1. So at the same time t1, this circuit is also activated, this circuit is also activated. So you can think about that in the architecture of 8085 microprocessor or any processor. The logic devices are actually fabricated like in this manner to maintain the speed. Few circuits works on positive going clock and few circuits works on negative going clock. So at the same time, if both the circuits are actually working, here you can see that time t1 both the circuits are activated and the signal is flowing from one circuit to the another circuit. So in this manner I will get a good speed like this one. Okay, so we have seen from the architecture point of view, we have seen that in the case of 8085 microprocessor, for example, this is my 8085 microprocessor. There are two pins. The pins are given a name X1 and X2, where you can connect one type of the circuit for the clock circuitry. And this clock circuitry we normally use in the case of one type of the, because you have stated that in the analog electronics, all the type of oscillators, and you have seen that the stability criteria is very big and very important in the case of oscillator. So the most important stable circuit is that your crystal oscillator. So you can connect your crystal oscillator here just like in this manner. So you can connect one crystal. You can connect one crystal. Okay, and you can connect to stabilize the frequency that it will start with some proper frequency. You can connect one capacitor, and here you can connect one capacitor like this one. So this capacitor will try to maintain the frequency on this. If this capacitor, this crystal is trying to generate some frequency, it will try to stabilize that frequency
with the help of the C1 and C2. So this circuitry we will always connect with the microprocessor. So this is the externally connected clock circuitry. Okay, so you can think about that, the clock frequency, the crystal frequency, okay, so I am writing FC instead of A4. So crystal frequency should be double of the working frequency of this one. So I am writing twice of F0, where FC is your crystal frequency. So I am writing FC is your crystal frequency, and F0 is your operating frequency. So this is my operating frequency. Okay, so you know that in the case of 8085 microprocessor, my operating frequency is 3.02 megahertz. So what will be the crystal frequency? The crystal frequency should be FC should be 6.04 megahertz. Why so? If anybody can ask that why it is so, because we can think about that outside तो आपने क्रिस्टल लगा रखा है 6.04 मेगाहर्ट्ज का, और फाइनली जो आपका जो अंदर जो आपका जो सर्किट है वो यूज कर रहा है 3.02. सो अल्टीमेटली वो अपन ये कह सकते हैं कि बाहर वाली फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, है ना? ऐसा क्यों? अब अपन आते हैं थोड़ा सा इसके अंदर. इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल गो. इफ सपोज दिस इज द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ माय 8085 microprocessor, so I am coming inside to MUPI. Okay, so my pins X1 and X2, I have connected one capacitor with a crystal. This is my crystal. I connected this crystal with some capacitor. So this is my capacitor C2, and this is my another capacitor, and here I am showing this is C1. Okay, so C1 and C2. Okay, so this is ground, this is ground. So here the frequency of this crystal is just like we can say it is FC is equal to 6.04 megahertz. You know that simply if you are using any type of the crystal, it is not able to generate any type of the oscillation waveform. So obviously you take the help of some oscillator circuits, either it may be some FET based or some transistor based or something like that one. So you have to use some oscillator circuits. So Intel had designed some types of the oscillator circuits on here, is that like that one. Okay, so these oscillators will try to generate the waveform, the square waveform of frequency of 6.04 megahertz. But the microprocessor will not use this 6.04 megahertz. Microprocessor want that this frequency should be divided by half. So how you can divide the frequency by half? Anybody can divider circuit using flip-flops? Yeah, we can use the frequency divider circuit, and the best frequency divider circuit is called as a T flip-flop. So if I connect the clock, and if I'm having the T input of this one, if I'm having Q and Q bar here, and this T, if I connected with VCC, so if I connect this T with plus VCC, if I'm supplying a clock of 6.404 megahertz, it shows that whenever we are using one type of the T flip-flop, it will always divide this one. So it will try to generate the frequency waveform like this one. Okay, so this is the Q, which is having, because it will be divided by 2. So this is the divide by 2 circuitry. I am writing as a divide by 2 circuit. Okay, so here I am getting my frequency of Q is equal to 3.02 megahertz, and here I am getting a frequency of Q bar is equal to 3.02 megahertz. अब आप कहेंगे सर Q और Q bar में क्या डिफरेंस होगा? अपन वेवफॉर्म के फॉर्मेट में देखें तो वेवफॉर्म के फॉर्मेट में यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि अगर ये इसका पॉजिटिव गोइंग अगर यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग में, तो सिमिलरली इसका ये इन्वर्जन है तो इसका नेगेटिव गोइंग आएगा, है ना? तो इसका नेगेटिव गोइंग लाइक इन दिस, like this, again this cycle will be repeated. Okay, so अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि
यहाँ पर आपके पास में अगर दो अलग अलग सर्किटरी है, एक सर्किट आपका पॉजिटिव गोइंग पे काम कर रहा है, दूसरा नेगेटिव गोइंग पे काम कर रहा है, और वो भी T1 इंस्टेंट पे आपको करवाना है, तो T1 इंस्टेंट पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर T1 इंस्टेंट पे आपको दोनों मिल रहा है, ऐसा भी मिल रहा है, इस तरह का भी मिल रहा है। इसको उठा के आप जो पॉजिटिव गोइंग पे है उसको आप कनेक्ट कर दो, और T2 पे जो है आपको जो भी मिल रहा है वो आप कनेक्ट कर दो। हालांकि ये सब इंटेल ने करे हुए हैं, आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये इंटेल ही आपस में उसने कनेक्ट किया हुआ अंदर सर्किटरी में, आपको एक्सटर्नली कहीं कनेक्ट नहीं करना है। तो फाइनली हियर आई एम गेटिंग T1 और T2 पे, सॉरी नॉट T2, ये आपका दिस इज माय FQ and this is my FQ bar. Okay, so this type at the time T1, if I am getting the two transition at the same time, so this type of the waveform is called as a biphase waveform, biphase clock waveform. Okay, and one more important concept on here is that your microprocessor is having one X1 and X2 pins for that crystal connection, and apart from that it is having the one type of the output signal, and that output signal is normally called as clock out. Can you please tell me what will be the clock out and what will be the frequency? So what will be the frequency of this clock out? I'm writing the option 1. Option 1 is my 6.04 megahertz, and option 2 is 3.02 megahertz. Can anybody unmute and then can tell me that कि सर ये क्लॉक आउट पे जो वेवफॉर्म मिलेगी वो क्लॉक आउट पे वेवफॉर्म क्या मिलेगी? जवान आ गया आपका, आप बोलना काम करते हैं, है ना? क्लॉक आउट पे मुझे क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगी? 3.02. Yes, because it is connected with the whatever the frequency generated by the divided by 2 circuitry. So option 1 is option 2 is correct, option 1 is wrong. Okay, so it is wrong and it is correct. Correct. So this is correct and this is wrong. So obviously, why we will require the clock out? Now the next question is that why will require the clock out? Because any externally connected, for example, if I am having this microprocessor, okay, so and I have connected one peripheral with this microprocessor. Okay, so if I connected this clock out pin, okay, so this clock out is having a frequency of 3.02 megahertz. So it will try to give the input as a clock to some peripheral. So obviously the frequency of this one will be 3.02 megahertz. But when this 3.20 megahertz will be generated? The next question, please tell me. What is the answer for that? When this 3.02 megahertz will be generated? This 3.02 megahertz will be generated when you connect some crystal, and this crystal should be into the working model. So this is the crystal. So this crystal should be in a working condition, and this capacitor should be connected here like this one. तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि जब ये बाहर वाला सर्किट अगर काम नहीं करेगा तो ये क्लॉक आउट का जो रिजल्ट है वो आपका 0 हो जाएगा, मतलब जनरेट ही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये जो है ये आपका एक्सटर्नली आपने कनेक्ट किया हुआ है, दिस सर्किट यू है एक्सटर्नली कनेक्टेड, so this externally connected circuit should be worked in a proper way. Got the point? Yes, you got the point? Yes, sir. Okay. So here I am stopping my lecture. Okay, in the next class, may possible that tomorrow I am having one extra class for you. So tomorrow again I will discuss instruction set. जब टाइम मिलेगा तो फिर अपन आर्किटेक्चर के ऊपर स्विच करते जाएंगे। कल का अपना इंस्ट्रक्शन सेट थोड़ा रह गया था तो पहले उसको अपन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्विज अटेम्प्ट करें अब, है ना? आई एम स्टॉपिंग। थैंक यू। गुड डे सर। गुड डे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। आई हैव अ डाउट सर, ऐसा कुछ है मतलब ड्यूटी साइकिल का कहीं इसमें रोल है फ्रीक्वेंसी? हाँ बेटा, वो तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना, मैंने क्लास एंड कर दी। ओके श्योर। मैं ड्यूटी साइकिल बताना भूल गया, तुमने बहुत अच्छा चीज। तो एक्चुअली कंडीशन अर्पित ये होती है कि आपका ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% होना चाहिए। बिल्कुल सर। है ना? तो 50% का अगर ड्यूटी साइकिल का अपन फॉर्मूला देखें
The formula according of the rules of the formula for duty cycle is T on divided by the T on plus T off. So it says that कि जितनी देर के लिए आपका T on है, आपका ड्यूटी साइकिल कुछ 50% होना चाहिए. तो 50% जो रूल है वो आपका ऑन हो जाएगा. वो स्क्वायर वेव का रहता है. तो अगर आपका ड्यूटी साइकिल का अगर आपको स्क्वायर वेव चाहिए तो ही आपको ड्यूटी साइकिल 50% मिल सकता है ना. तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. बिल्कुल सर.